Hello everyone. So today we are going to learn about the chapter 2 of geography, inside our earth. In our previous video we saw what is inside our earth. That is, the first is the crust, then the mantle, then the core, and then in the last is the again core. Right? The earth is divided into the four different parts. So if you have not seen our previous video, then I request you to please visit our previous video because this is the continuation of that topic. So let's begin with our topic. Today our topic is rocks and minerals, because in our previous video we saw what are the layers of the earth, right? That is the crust, mantle, inner core and outer core. Now from that core we are moving towards the rocks and minerals. So how these rocks and minerals formed on the earth? There should be something. ऐसा कुछ तो हुआ होगा ना, या ऐसा कुछ तो होता होगा ना जिसकी वजह से ये रॉक्स और मिनरल्स फॉर्म होते हैं, राइट? ये रॉक्स आते कहाँ से हैं, कैसे बनते हैं? बिकॉज हमने डिफरेंट वेराइटीज ऑफ द रॉक्स देखते हैं, राइट? कहीं पे कैसा ब्लैक रॉक होती है, कहीं पे कोई सा कलर की होती है, राइट? कहीं पे उसका स्ट्रक्चर ही डिफरेंट होता है. सो हाउ दिस रॉक्स आर फॉर्म्ड? सो there are total three types of rock, basic three types of the rock. The first is the igneous, then the sedimentary, then the metamorphic. These are the three basic type of the rock. Like you can see the picture of the igneous rock in such a manner, like the igneous rock is visible to us. Then you can see the metamorphic rock and the sedimentary rock. These are the certain examples of the structure of the rock, how they looks to us. So these are the three main type of the rocks. They are different in various types, like they are different to each other in the color, they are different to each other in the size, they are different to each other in the texture, but then also they are formed from each other. Means ये सब कुछ सारी चीज़ें अलग दिखती है. आप इग्निशियस को देखेंगे, सेडिमेंट्री को देखेंगे या मेटामॉर्फिक को देखेंगे, राइट? तो सबका टेक्सचर अलग है, सबका कलर अलग होता है और सबका साइज अलग होता है. बट ये बनते कैसे हैं, अब हम इसके बारे में देखते हैं, राइट? और रिमेंबर वन थिंग इन योर माइंड, दैट इज दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम ईच अदर्स. मीन्स सारी जितनी भी रॉक अर्थ पे फॉर्म होती है वो सब एक दूसरे से ही मिलके बनी हुई होती है, राइट? उनका कुछ कंपोजिशन, कुछ केमिकल प्रोपोर्शन चेंज हो जाता है जिसकी वजह से वो एक नई रॉक बन जाती है. तो लेट्स विजिट दैट स्लाइड. Okay, so you can see over here there are the classifications of types of rock. The first is the igneous rock, then the sedimentary rock and the metamorphic rock. And igneous rock is further classified into the two halves. First is the extrusive igneous rock and the second is the intrusive igneous rock. Okay, so both are the igneous, but the one is extrusive and one is intrusive. And what is the basic difference between this extrusive and intrusive? Means ये extrusive और intrusive igneous rock ये दोनों ऐसे अलग classify कैसे होगा? Never bother about it because I am here. So I will explain you how this igneous rock is formed. That is our first thing. Okay. Before going to the theory, let's visit some images. Okay. So here is the picture. Then you can understand how the intrusive or the igneous rocks are formed. So igneous rocks are formed through the magma. Means हमने volcanoes तो सुने होंगे. Volcanoes से जो लावा बाहर आता है, वो जब जो स्टफ जो बाहर आता है रेड कलर का, जब वो बाहर आ जाता है हम उसको बोलते हैं लावा. बट जब वो अर्थ के अंदर रहता है उसको हम बोलते हैं मैग्मा. लाइक अभी ये अर्थ के अंदर है, यू कैन सी ओवर हियर. अभी ये अर्थ के अंदर है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज मैग्मा. बट व्हेन ये अर्थ के ऐसे बाहर आ जाएगा तो हम उसको बोलेंगे लावा. फाइन, देन वी कॉल इट एज लावा. तो जब ये मैग्मा अर्थ के अंदर ही, लाइक ये मैग्मा जो है ये अर्थ के अंदर ही अगर ठंडा हो जाएगा, कूल डाउन हो जाएगा, और अगर मैग्मा बहुत गर्म होता है, अगर वो कूल हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा. जैसे हमको ही पता है ना, वाटर, हम वाटर को जो फ्रिज में रखते हैं, रेफ्रिजरेटर में, इन द ट्रे, देन जब वो फ्रीज हो जाता है तो वो भी कैसा हो जाता है, सॉलिड फॉर्म में आ जाता है. तो सेम इज जब मैग्मा भी जब अर्थ के अंदर ही, दिस मैग्मा इनसाइड द अर्थ, जब वो सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, मीन्स वो ठंडा हो जाएगा और सॉलिड बन जाएगा, देन वी कॉल दैट रॉक
दैट पीस ऑफ रॉक एज इग्निशियस रॉक, तो हम उसको क्या बोलेंगे, इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक। क्योंकि अब इसमें देखो याद करने का कुछ नहीं है, दैट इज ये क्या है, इनसाइड है, और इनसाइड के लिए हमने वर्ड क्या यूज करा, इंट्रूसिव। इंट्रूसिव मीन्स इनसाइड द अर्थ, ठीक है। एंड व्हेन दिस लावा कम्स आउट फ्रॉम द वॉल्केनो एंड टू द सरफेस, जब ये लावा वॉल्केनो से सरफेस पे ऐसे आने लग जाएगा, एट दैट टाइम जब ये बाहर आके ठंडा होगा, तो हम उसको बोल देंगे एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक। गॉट इट? मीन्स द इग्निशियस रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द वन थिंग, दैट इज द magma or the lava. Means from the magma or the lava igneous rocks are formed. Okay, when magma cool inside the earth, we call it as intrusive igneous rock. When the magma comes outside the earth and it becomes the lava, and we call it as extrusive igneous rock. You can see this picture here. We can see this is the lava. This is the लावा, बिकॉज इट इज ऑन द सरफेस, ये सरफेस पे आ चुका है तो हम इसको लावा बोल रहे हैं। बट जो स्टफ इसके अंदर होगा ना, वॉल्केनो के अंदर, उसको हम बोलेंगे मैग्मा, ठीक है। तो ये लावा बाहर आ गया, अब ये यहाँ पे आके देख रहे हो आप, ये यहाँ पे कितना गर्म दिख रहा है और यहाँ थोड़ा ठंडा दिख रहा है ये। सो देन ये जो एरिया है जो ठंडा हो चुका है, अब ये जब पूरा कूल डाउन हो जाएगा और इससे जो रॉक बनेगी, दैट विल बी कॉल्ड एज एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक, राइट। और व्हेन दिस स्टफ कूल्स इनसाइड इट, then it will be called as intrusive igneous rock. That's it. This is the simple thing. सबसे बेस्ट है ये समझने के लिए। आप थ्योरी पढ़ते आपको समझ में नहीं आता, बट आई होप ये इन पिक्चर्स को देख के, इस लॉजिक को समझ के आपको पूरा रॉक फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। एंड रॉक फॉर्मेशन में भी हमने अभी सिर्फ पढ़ा है इंट्रूसिव रॉक, राइट, सॉरी इग्निशियस रॉक। इग्निशियस के दो पार्ट्स हमने देख लिए हैं, इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव। लेट्स मूव टुवर्ड्स बिट थ्योरी पार्ट। ओके, so here we are with the intrusive igneous rock. So when the molten magma cools, it becomes solid. जो molten magma, like जो चैम्बर हमने देखा था ना वॉल्केनो के अंदर जब लावा रहता है, जब वो मैग्मा ठंडा हो जाएगा, cools, the rock thus formed is called igneous rock, और उससे जो रॉक बनेगी that will be known as igneous rock. Okay, और इस रॉक को हम प्राइमरी रॉक बोलते हैं, बिकॉज इग्निशियस रॉक से ही सारी रॉक फॉर्म होगी। इग्निशियस रॉक इज द प्राइमरी रॉक, विदाउट इग्निशियस रॉक फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। तो जब तक इग्निशियस रॉक नहीं बनेगी तब तक हम दूसरी रॉक्स नहीं बना पाएंगे, राइट। तो इसलिए हम इस रॉक को क्या बोलेंगे, प्राइमरी रॉक। इस रॉक को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, दैट इज द इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक एंड द एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक। फाइन, देन व्हेन द लावा कूल्स इनसाइड द अर्थ, देन वी कॉल इट एज intrusive igneous rock. Fine, you can see over here when the lava actually very red molten magma comes out of the interior of the earth, means earth के अंदर से बाहर आ जाता है on the surface. When the molten lava comes on the earth surface, it rapidly cools down. जैसे वो बाहर आएगा और वो ठंडा हो जाएगा, and when it becomes cooled down, it becomes solid. And when it rapidly cools down, you can see this, when it rapidly cools down, it becomes solid, and the rock formed in such a way is called extrusive igneous rock. And the example of igneous rock is basalt. What is the example of igneous rock? Basalt. And remember one thing, India का जो Deccan Plateau है, that is made up of basalt rock. Deccan Plateau means एक एरिया है जिसको हम Deccan Plateau बोलते हैं, like this is the India. Fine, this is the bottom part of the India. This is the bottom part of the India, like this is the Sri Lanka, over here is the Sri Lanka, and this is the bottom part of the India, right? So over here we have Maharashtra, Andhra Pradesh and West Bengal, and these are the states over here. So these area, ये जो area है, right, ये जो area है, like जो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल वाला area, this area is known as Deccan Plateau. और यहाँ पे जो rock form है, that is the basalt rock. अब ये कहाँ से यहाँ पे आई, बिकॉज इंडिया में तो वॉल्केनो है नहीं, इंडिया में तो वॉल्केनो है ही नहीं, बट ये रॉक यहाँ पे कहाँ से आ गई, ये चीज़ अभी आपके लेवल पे नहीं है। फाइन, सो राइट नाउ इट्स गुड टू लर्न दैट आवर डेक्कन प्लेटू इज मेड अप ऑफ बेसाल्ट रॉक। ये जो चीज़ है कि यहाँ पे रॉक कहाँ से आई, ये बड़ी क्लासेस का लेवल है, आपको वहाँ पे बताया जाएगा। इवन मैं भी बता सकता हूँ, बट
right now we don't have, right? So we continue with the topic. The magma cool downs and deep inside the earth crust and the solid rock are formed is called the intrusive igneous rock. Since they cool down slowly and they are the large grains, the grains example of such is the rock, granite, sorry. So when the lava cools down inside, जब वो inside ही मीन्स ठंडा हो जाता है, मीन्स अर्थ के इनसाइड ही अगर वो कूल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, तो जब उससे जो बनेगा दैट जो रॉक विल बी फॉर्म्ड दैट इज नोन एज ग्रेनाइट. एंड द ग्रेनाइट इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग द पेस्ट पाउडर स्पाइसेस एंड द मेड अप ऑफ द ग्रेनाइट. So this is the two types of the rock. Under the igneous we saw the intrusive and the extrusive. I hope you all got it. We have seen this picture that how the intrusive and the igneous rocks are formed and the extrusive igneous rocks is formed. Now let's move ahead. That is, we also saw a picture of the magma and the lava. Then let's move ahead. Now here are two different types of rock. That is the sedimentary rock and this next is the metamorphic rock. Okay, sediments. Rock बाद में पढ़ना. First remember the word sediment, right? The core word over here. This is the core word over here. Sediment. Sediments क्या होता है? Means छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं, लाइक छोटे छोटे से जो टुकड़े हो जाएंगे किसी एक बड़ी चीज़ के, तो हम क्या बोलेंगे? सेडिमेंट्स, राइट? इफ हमसे एक बॉटल है, राइट, ग्लास बॉटल है, मीन्स कांच का बॉटल है, और अगर वो फूट जाता है, राइट, हमारा हाथ से स्लिप हो गया, अब वो गिरा नीचे और ब्रेक हो गया. अब वो जब ब्रेक हो गया तो उससे जो उसके जो पार्ट्स बहुत सारे हो जाएंगे, लाइक वो ब्रेक होने के बाद बहुत सारे पार्ट्स हो जाएंगे, तो व्हाट वी कॉल इट, दीज आर द सेडिमेंट्स ऑफ द बॉटल, ग्लास बॉटल. सो राइट, तो सेडिमेंट्स मीन्स उसके छोटे छोटे से प्रोपोर्शन. सेडिमेंट्री रॉक्स भी जो है दैट इज मेड फ्रॉम द इग्निशियस रॉक. और इग्निशियस रॉक से कैसे कि इग्निशियस रॉक के जब छोटे छोटे से पार्टिकल्स डिफर होते जाते हैं, इग्निशियस रॉक जब ब्रेक डाउन होगी और उसके जब छोटे छोटे स्मॉल प्रोपोर्शंस में अगर वो डिवाइड होने लग जाएगी और वो बिखर जाएगी, देन दो स्मॉल प्रोपोर्शंस विल गैदर टुगेदर एंड मेक द सेडिमेंट्री रॉक. Okay, here is the example of sedimentary rock. This is the sedimentary rock, right? You can see these layers in the sedimentary rock. ये जो आपको layers दिख रही है, like बहुत सारी layers ऐसे जा रही है, like ये इधर से ऐसे, ये ऐसे, ये जो अलग अलग layers जा रही है. These layers are made from the igneous rocks के बहुत सारे छोटे sediments हो गए. Igneous rock break down हुई sediments के अंदर, and when this rock is broke into the sediments, then it became under certain pressure or heat, this sedimentary from the igneous rock we form the sedimentary rock. Means you can see now by the theory, when the rock roll down, means जब वो particles में break होना start होती है, roll down, crack or hit each other and the broken down into the small fragments then this small particles, अब क्या हुआ, बॉटल टूटा, बॉटल गिरा, टूटा और स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड हो गया. when this is divided into small particles, then these small particles are called sediments. अब इन small particles को हम क्या बोलते हैं? sediments. Then these sediments are transported and deposited by the wind and water. अब ये अगर sediments आज यहाँ पे इस रूम में हुए हैं या आपके घर पे हुए हैं, तो एक टाइम में क्या होगा, by the means of wind और water क्या होंगे, ये ट्रांसपोर्ट होंगे. बिकॉज विंड से क्या होता है हमको मालूम है, जब हवा चलती है तो बहुत सारी डस्ट भी हवा में होती है. व्हेन द वाटर फ्लोज तो वो भी अपने साथ में मिट्टी या डस्ट जो भी होता है वो सब कुछ लेके जाती है. तो वो क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन मीन्स एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं. तो इन द सेम मैनर द सेडिमेंट्री सेडिमेंट्स ऑफ द रॉक्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस. एंड these lost sediments are composed and hardened into the form of the layers of the rock, and the types of the rock formed is called sedimentary rock. फिर ये layers, if यहाँ पे इसके parts टूटे हैं, right, इस place पे अगर ये breakdown हुआ है, यहाँ breakdown हुआ है, यहाँ से rock और water की वजह से ये transport होके यहाँ आ गए, यहाँ पे बहुत सारे sediments अब इकट्ठे हो गए, right, these are the small particles. फिर from the heat,
like the sunlight or the heat, and for the high temperature and the pressure, these sediments will compress and form a sedimentary rock. Fine. So this is the example of the sedimentary rock. Now, seen further, the sedimentary rocks, then the igneous and the sedimentary rocks are changed into the metamorphic rock. And what is the metamorphic rock? Metamorphic rock क्या होता है? सेडिमेंट्री रॉक से आपने इग्निशियस रॉक से आपने सेडिमेंट्री रॉक बनाया, और जब इग्निशियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक को बहुत ज़्यादा प्रेशर मीन्स बहुत ज़्यादा हीट एंड विद बहुत ज़्यादा प्रेशर, it will be changed into metamorphic rock, right? It will be changed into metamorphic rock. जब when the igneous rock and sedimentary rock, जब दोनों रॉक्स होगी उनमें जो बहुत ज़्यादा गर्मी होगी मीन्स बहुत ज़्यादा हीट, and when with the बहुत ज़्यादा pressure, this both rock will be changed into the metamorphic rock. And the changing of this rock, the changing of all this process of transformation of the rock from one to another is known as rock cycle. This stuff is known as rock cycle, right? ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इग्निशियस से सेडिमेंट्री में एंड इग्निशियस एंड सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक में, ये जो पूरा साइकिल चल रहा है, दिस साइकिल इज नोन एज रॉक साइकिल. सो you saw the picture of the sedimentary rock, and here is the best example of rock cycle, because here we can see the igneous rock. It is made from the sea, it is made from the by cooling of the magma. ये igneous rock बनी. igneous rock से weathering और erosion की वजह से देखो ये छोटे छोटे से sediments बन गए. Fine. Then this sediments जो कंप्रेस हुए, तो कंप्रेस होने से ये सेडिमेंट्री रॉक बन गए. लाइक यू कैन यू सी ओवर हियर, यहाँ पे लाइन बना हुआ है, राइट, कि कंप्रेशन और इससे की वजह से सेडिमेंट्री रॉक बन गए. देन सेडिमेंट्री रॉक भी हाई प्रेशर में, with the high pressure and heat, it becomes the metamorphic rock, and again this metamorphic rock will melt down and become the magma. This is the rock cycle. Then igneous rock will also change into the metamorphic rock. Then igneous rock can also melt down again to the magma rather than forming an sedimentary rock. And by the metamorphic rock is also the procedure, with the procedure of weathering and erosion, it will also form the sediments. So all the three types of rocks are interdependent on each other. But remember one thing, the most important thing, that is the igneous rock is the primary source. जब तक igneous rock form नहीं होगा तब तक neither metamorphic rock can be formed or neither the sedimentary rock can be formed. So the primary source of rock, that is the igneous rock. That's why we call it as the primary rock. Fine. So these were the types of the rock and the cycles of the rock. Then moving ahead, the rocks are made up of the different minerals, and minerals are naturally occurring substance which has the certain physical properties and the definite chemical composition. The minerals are very important to the humankind. Some of us used as fuel, and for example coal, natural gas, petroleum, they are also used in the industry, iron, aluminium, gold, uranium, etc., in medicines and in the fertilizers, etc. So रॉक्स जो होती है वो कैसे बनी होती है, उनके अंदर डिफरेंट मिनरल कंपोजिशन भी होता है, राइट. और वो मिनरल्स क्या होता है, मिनरल्स हम यूज़ करते तो हैं, वी यूज़ फ्यूल. आप जब बाइक चलाते हैं या आप जब स्कूटी चलाते हैं तो उसके अंदर आपको पेट्रोल डलवाना पड़ता है. व्हाट इज़ दैट पेट्रोल? द पेट्रोल इज मिनरल, राइट. आप गोल्ड पहनते हैं, व्हाट इज़ दैट गोल्ड? द गोल्ड इज मिनरल. आप आयरन का यूज़ करते हैं, आपके घर पे बहुत सारे आर्टिकल्स आर मेड अप ऑफ आयरन. व्हाट इज़ दैट आयरन? दैट आयरन इज ऑल्सो मिनरल्स. So things we got from the nature, right, and these things are we got from the inside the rock. So these are known as minerals. So this is our short topic of today. We saw the sedimentary, we saw the rocks, we saw the minerals. Under the rocks we saw the types of rock, that are the igneous, metamorphic and the sedimentary rock. We saw the igneous rock is further divided into the two parts. Those are the intrusive igneous rock and the extrusive igneous rock. Then we also saw that the igneous rock को हम क्या बोलते हैं, that is the primary rock, because without igneous rock हमको rock, sedimentary rock or metamorphic rock cannot be formed, right. So that's why the igneous rock is the primary rock, and from the igneous rock we form the other two types of rock, right.
So that's all for today, and thank you for being with us. Thank you, guys.